So till the last class, we had seen all these things, the cofactors, the different terminology used. Am I audible? Hello. Yes, Am I sir. audible? Okay. Yes, sir. So maybe something is wrong with the system. It's going slow. Anyways, so we had been through these slides, these points, the different terms used in the enzyme studies, and different uh, definitions also we had seen, and about the cofactors, the organic ones, the non-organic ones, right? The covalently bounded cofactors, which are loosely bound. There are some which are loosely bound. So we had been through all those, the cofactors, and then few of the, the properties by which we can categorize enzymes from others. We had seen that too. And now we'll just go to the what's wrong with it. I think this we have seen. Some common terminologies also we have seen. How they are bound, what are prosthetic groups, what are, allosteric compounds, allosteric enzymes, those which regulate the mechanisms are called allosteric. Okay, the classification of enzyme. So, what type of classification is given? So, the monomeric enzymes, the oligomeric enzymes, and the multi-enzyme complexes. So, what is it? What is monomeric enzyme? Some monomeric enzymes are those enzymes which consist of a single polypeptide chain or subunit. What does that mean? I don't understand. What does that mean? Single polypeptide chain. What does that mean? Polypeptide chain is in itself a polymer, right? It's polymeric. So what does a monomeric enzyme means? That means the whatever the polypeptide chains that have been synthesized or manufactured, if there's only one polypeptide chain which acts as an enzyme, we would call it as monomeric enzyme. And if oligomeric enzymes consist of two or more polypeptide chains, which usually participate in regulating or the one side. Actually, enzyme itself, the protein molecule itself is a polymer, right? So, what is the meaning of monomeric enzyme? It tells us that monomeric means only one chain which has been synthesized, and if that one chain is participating in enzymatic activity, then we would call it as a monomeric enzyme, but not the monomeric protein molecule, right? Because protein molecule is already a polymer of monomers, and that is sub units that are amino acids. It's a multiple amino acid setup. It's a chain of amino acids. So it's already a polymeric compound. But if there is only one chain
and that one chain is involved in the enzymatic activity, we call it as monomeric enzyme. And the same way is oligomeric, when there are more than two or more polypeptide chains are involved in enzymatic activity, then we call it as oligomeric enzymes. And the multi-enzyme complexes. Multi-enzyme complexes contains what? Several copies of one or several enzymes, polypeptide chains, packed into one assembly. Enzyme complexes carry out a single or a series of biochemical reactions taking place in the cell, such as fatty acid synthesis. ये क्या आपने पढ़ा है? फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ा है क्या? लिपिड सिंथेसिस पढ़ा है? Metabolism, anabolism, and catabolism. Catabolism is the breakdown of fatty acids, and anabolism is the synthesis of fatty acids. So if you have gone through them, we would know there are multiple polypeptide chains forming a different complex molecule of either globulin sort of, or even having molecules with multiple pleats and multiple attachments and multiple cross-linking linkages and cross linkages between different monomeric chains, and then they make a big complex, and that complex usually helps in conducting a series of enzymatic activities in a particular metabolic pathway. So those are called multi-enzyme complexes. Now the classification of enzyme, in which we would be seeing how the EC numbers have been allotted according to the International Union of Biochemistry, that is IUB, right? And the enzyme name has two parts. First part is the name of the substrate of the enzyme, and second part is the type of reaction catalyzed by the enzyme. So earlier they were named as the systematic name. Systematic names really having two names, like tyrosine kinase. Okay, so the tyrosine is a part. The tyrosine kinase is an enzyme which acts upon tyrosine, and the type of reaction it does, type of action it does, that is the kinase activity. So the second name carries out the type of reaction catalyzed by the enzyme, and this part ends with the suffix ase. Example, lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase, that is lactose. It will act upon the lactose molecule, which is what is it is disaccharide, and it dehydrogenase means it dehydrogenates that molecule. It removes the hydrogen from that molecule for carrying out the metabolic reactions. So that way they were named. जब भी जिस पे काम करते हैं वो एक नाम यूज करते हैं जिस पे they act upon. The enzymatic activity is carried on some complex, some substrate, and that substrate name has been used, and the type of the action it does, that name also has been used with the suffix of ase. Okay, so an enzyme is named according to the names of the substrate and the catalytic activities. Okay, so these are a few examples. So suppose maltose and water. So maltase, it will act upon maltase. It converts it into monosaccharides of glucose. So there are different there were some other types of depiction also, names before the systematic way of naming enzymes were formed. जैसे कि अब यहाँ pepsin, trypsin, renin, and by adding suffix only suffix जैसे कि ASE add करते थे, और जैसे कि ये maltase लिखा हुआ है. The maltase is an enzyme which acts upon maltose, which is a disaccharide, and converts into monosaccharide, that's glucose. So there are other examples and other nomenclature systems which were existing before the EC system has evolved. तो ये सब दिया हुआ है आपको, कुछ examples दिए हैं. We are not concerned about those these slides. I would share this content to you all so that you can go through and
See, it's an International Union for the Biochemistry and Molecular Biology, IUBMMB, adopted rules in 1992 for the systematic classification and the designation of the enzymes based on reaction specificity. So it was accepted in 1992 that we should mention, along with the name of enzyme with the suffix ase, we also should mention the type of activity it does, right? So all the examples and they classified into 6 major classes according to the nature of the chemical reaction catalyzed. So one is the oxidase, oxidase or reductase. Both were considered in one category because both the reactions are complementary to each other. So oxidoreductase. Oxidoreductases are those enzymes which involve themselves in oxidation or reduction of the compound or the substrate, right? That means the enzyme which helps in oxidation or the reduction of the substrate and getting it and resulting in products which we require in some metabolic pathway. They are categorized under oxidoreductases. Okay, and then the second one is the transferases. Transferase is an enzyme which would transfer the functional groups from one portion of the substrate. Either sometimes it removes or sometimes it transfers the position of the functional group it has been attached with. So, and the third one is the hydrolysis. That is a hydrolysis. हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना या ऐड करने वाली बातें हैं जो है तो वाटर मॉलिक्यूल से जब वो रिलेटेड रहेंगे तो हम उनको हाइड्रोलिसिस के अंडर में क्लासिफाई करते हैं एंड द लाइसिस मींस क्लीविंग में ब्रेक करना तोड़ना बॉन्ड्स को ब्रेक करना या डबल बॉन्ड ओ है डबल या फिर CN है C बॉन्डेड विद N है C बॉन्डेड विद अनदर C है इन सब से और दूसरे भी ग्रुप्स हो सकते हैं लेकिन बेसिकली हमारे फूड सब्सटेंस में हमको ये सब ज़्यादा मिलता है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन राइट तो जब इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने की बात होती है तो उन सब वो एंजाइम्स which are involved in breaking the bonds are all considered under the lysis. Okay. उसके बाद है isomerases. Isomer आपको मालूम है isomer मतलब क्या है? Can anybody tell me what isomer is? Can anybody tell me what isomer is? Nobody? Isomerase is? Nobody? What are isomers? What are isomers? मेरी आवाज नहीं जा रही आप लोगों को? आ रही है सर। हाँ तो आइसोमर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में व्हाट आर आइसोमर्स यस सर बोलिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आइसोमरिज्म Sir, the compounds which have similar molecular formula but are different a little bit in their structure. Somebody else was They saying can something. have spatial differences or geometrical differences. Okay. Okay, they may have the structural differences, but they have the molecular formula as same. The structural difference. So do they work on the same basis, on the same pathway, on the same base? How do they work? If some it's an enzyme, if you find an isomer, the molecular formulas may be same, but they may be different in their structures, right? The structural differences might exist, like जैसे कि कौन सा इनॉल वाला एक है ना एल्डियोल
aldehyde and ketones हैं। नहीं तो ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होने के बावजूद उनका फॉर्मूला एक हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, तो क्या उनके इफेक्ट्स भी अलग रहते हैं? उनकी एक्टिविटी या उनका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट रहता है? एनी आइडिया? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक वो कौन सा रिएक्शन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जिसमें CHO वाले में ये क्या होते हैं? acids, noic acid, Al is aldehyde and OL is alcohol and ONE is ketone, right? Ketone and aldehyde have similar, many of the molecules, not many of the molecules, the lower, जैसे meth eth वाले जो हैं उनके molecules aldehyde और ketone के presence में same निकलता है, right? But they affect differently. That means suppose a molecule is needed, it doesn't need structural variation, but it needs its effect to be different, right? Suppose there are some enzymes which may act upon substrate, which substrate's reaction, the substrate's action, maybe, you know, it might affect in a different way in a metabolic pathway. Suppose एक aldehyde है, उसे ketonic form में उसको अपने आप को उसका काम करना है, कीटोनिक फॉर्म में वो ज़्यादा इफेक्टिव है aldehydic फॉर्म से. So there are enzymes which might help them in converting from the aldehydic से हटकर वो कीटोनिक फॉर्म में एक आइसोमर फॉर्म कर लें, and their activities carried on. That way the enzymatic activity has been, the metabolic pathway has been accomplished. यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो सबस्ट्रेट के आइसोमर्स फॉर्म करते हैं, और वो क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल के इफेक्ट को या तो ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं या फिर सम अदर इफेक्ट if it is requested, if it is demanded of some other effect, that effect will be, you know, carried on. यानी कि वो सबस्ट्रेट का आइसोमर्स बनाते हैं जिनके इफेक्ट को चेंज किया जा सकता है, दो केमिकली वो फॉर्मूले वाइज वो देखा जाए तो वो डिफरेंट नहीं है. तो ये आइसोमरेजेस भी हैं कुछ. और फिर दूसरा एक है लाइगेजेस मतलब लाइगेट करना मतलब जोड़ना. ओके, तो जोड़ने वाले यानी कि कहते हैं 6 हैं, आपको मालूम चल गया, जिसमें ऑक्सीजन रिडक्शन होता है उनको ऑक्सीजो रिडक्सेट्स बोलते हैं, एंड जिसमें ट्रांसफरेज मतलब कुछ पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल या कुछ पोर्शन ऑफ कंपाउंड या फिर कहें तो फंक्शनल यूनिट्स है, फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो जब ट्रांसफर किए जाते हैं एथिल मिथिल ट्रांसफरेज. ऐसे बहुत है, एक HIOMT क्या हाइड्रोक्सी इंडोल ऑक्सी मिथिल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम है जो यूज होता है आपके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को इफेक्टिव करने के लिए. आई मीन वो एक सिर्फ एक मिथिल ग्रुप को ट्रांसफर करता है उस पे. समटाइम्स यू नो फंक्शनल ग्रुप जो है, जैसे अभी आप देखिए एक आइसोमर है, आइसोमरेजेस में मैंने आपको बताया कि अल्डिहाइडिक फॉर्म में वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, हो सकता है वो कीटोनिक फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव हो. तो एक एंजाइम आता है जिसका जो एक आइसोमरेज है, आइसोमरेज नाम का एंजाइम होगा जो उसके एल्डिहाइडिक फॉर्म को कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है. यहाँ पे क्या हुआ, उसके फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया उसने, so that it becomes an isomer and it will act in a better way. But transferases का मतलब ये नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप को, मैंने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करना, तो ट्रांसफर करना मतलब ये नहीं है कि जैसे एल्डिहाइड से इनोल फॉर्म में कीटोन फॉर्म में ट्रांसफर, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में ट्रांसफर करना. बट दैट कम्स अंडर आइसोमरेजेस बिकॉज उनके केमिकल फॉर्मूले चेंज नहीं हुए. बट इन सम केसेस यदि हम वो ग्रुप को हटा के कुछ और जगह रख देते हैं तो केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा नहीं, फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, बट वो स्ट्रक्चरली चेंज हो जाएगा. बट ट्रांसफरेजेस डोंट इंक्लूड दोज एंजाइम्स. Transferases are those enzymes which would bring the functional groups along with them. Those enzymes which have those functional groups attachment facility. यानी enzymes methyl group transfer करते हैं, लेके आते हैं उसको methyl group देते हैं. So as soon as the methyl group is been transferred to the substrate, it becomes active or it becomes sufficient, efficient enough to carry out the
एंजाइमेटिक एक्टिविटी, राइट। उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। उसके बाद बॉन्ड्स को तोड़ने वाले को हम लाइसेस कहते हैं, और आइसोमर्स फॉर्म करने वाले को आइसोमरेजेस कहते हैं। और फिर बाद में जो यूजुअली जोड़ता है ना, जोड़ देते हैं जिनमें जो पोर्शंस को जोड़ते हैं, हम उनको लाइगेसेस कहते हैं। Ligase involved in the biochemicals of a compound with the simultaneous hydrolysis of pyrophosphate bonds in ATP as a similar or a similar triphosphate. ये समझा गया आपको इस बात में? जैसे कि अभी AMP है, ADP है, ATP है, इसमें क्या हो रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते रहते हैं, ये जोड़ना हो गया। AMP का ADP बनना, डाइफॉस्फेट बनना, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। If it is involved by an enzyme, we would call it as, ligases. Okay. ये 3 क्लासेस हैं, तो आपने देख लिया उन सबको हमने फिर एंजाइम कमीशन ने उनको नंबर दिया है, that is EC1, EC2, EC3, EC4, 5 and 6. So enzyme commission 1, that is for the oxidoreductases, and enzyme commission 2, that is EC2 for the transferases, and enzyme commission 3, that is EC3, that is for hydrolases. And similarly, enzyme commission 4, that is EC4 for lyases, that means those who break the bonds. And in EC5, that is enzyme commission 5, is allotted for the isomerases, though those enzymes which make isomers of the substrates and help them carrying out the metabolic processes. And enzyme commission 6, which is EC6, which categorizes all those, which compasses all the enzymes which usually ligate means जोड़ना, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ें दी हुई, और enzymes are classified according to the report of the nomenclature commission appointed by the International Union of Biochemistry that in 1984. Okay, this enzyme commission assigned each enzyme a recommended name and a 4-part distinction number. Okay, distinguishing number. The enzyme commission numbers divide enzymes into main groups according to the types of reaction they catalyze. जो हमने देखा था oxidoreductases, है ना। उसके बाद में आपने देखा transferases, उसके बाद hydrolases, उसके बाद में आपने देखा कि lyases, उसके बाद isomerases and the ligases. ये जो इनके रिएक्शन एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी के बेसिस पे जो क्लासेस बनाए थे उनको ऑलरेडी नॉमेनक्लेट किया गया था, EC1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद जो दूसरे एंजाइम्स उनको फिर हमने और अलग-अलग तरीके से, यानी ऑफ सब डिविजन्स में उनको नॉमेनक्लेट किया था। EC number is of 4 digits, for example A, B, C, D, where A is the case, is the class, B is the subclass, C is the subclass, and D is the subclass. Subclass. So B and C digits describe the reaction. B and C digits describe the reaction, while the D digit is used for distinguishing between different enzymes of the same function based on the actual substrate in the reaction. है ना? कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए जैसे हमने वो लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज की बात कर रहे थे, राइट। तो कैसे लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज है तो वो किस में जाएगा? हाइड्रोलिसिस में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल H और OH से रिलेटेड है। तो हाइड्रोजनेज में जब जा रहा है, सॉरी हाइड्रोलिसिस में जब जा रहा है, तो वो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस है तो उसको तो EC3 नंबर मिल चुका है। तो उसके बाद फिर जब सेकंड नंबर जो आएगा वो बताया जाएगा, जिसमें उसमें लिखा है कि B and C digit describe the reaction, तो कैसे डिहाइड्रोजनेज। अब डिहाइड्रोजनेज हो सकता है या फिर हाइड्रेशन हो सकता है या डिहाइड्रोक्सिलेज हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन निकालने वाला काम, हाइड्रोक्सिलेज मतलब OH निकालने वाला काम, या फिर हाइड्रोलिसिस में जिसे हम बोलते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड। तो ये जितने भी हैं आपको B और C जो टाइटल है यानी कि डिजिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन को, यानी कि हाइड्रोक्सिलेज को 1 नंबर होगा, हाइड्रोक्सिलेज को, और डिहाइड्रोजनेज को 1 नंबर होगा। सपोज डिहाइड्रोजनेज को 1 है, हाइड्रोक्सिलेज को 2 है, तो हमारा जो लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज जो है वो क्या हो जाएगा कि 3.1, दैट इज डिहाइड्रोजनेज की हम बात किए थे। फिर उसके बाद C भी रिएक्शन को ही बताता है कि डिहाइड्रोजनेसिस में भी क्या और टाइप के हैं,
जो ऑर्गेनिक का फैक्टर इन्वॉल्व करता है, या फिर कहना चाहिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करता है उसको हम शायद 1 से बोलते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करता है उसको हम बोलते हैं 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद 3.1 प्लस 1, ये दोनों चीजें जो रिएक्शन के ऊपर फोकस्ड है, बी और सी, सेकंड एंड थर्ड डिजिट। फोर्थ डिजिट जो है वो फिर बताता है कि वो कौन से टाइप के सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। दैट मींस यहाँ पे वो लैक्टोज पे एक्ट कर रहा है, तो लैक्टोज को एक्ट करने वाले को शब्द उसका उसको 3 नंबर का डेजिग्नेशन किया है। यानी जितने भी डिहाइड्रोजनेसेस थे, जो ऑर्गेनिक वाले थे वो 1 में आते थे, इनऑर्गेनिक वाले 2 में आते थे। उसके बाद फिर देखा गया कि जो ऑर्गेनिक में है वो लैक्टोज पे काम करने वाले, माल्टोज पे काम करने वाले, सुक्रोज पे काम करने, ऐसे अलग 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 ढेर सारे एंजाइम्स होंगे जो सबस्ट्रेट पे काम करते हैं अलग अलग। तो हर सबस्ट्रेट पे काम करने वाले डिहाइड्रोजनेस को फिर से नॉमेनक्लेट किया गया 1 2 3 4। सपोज लैक्टोज पे काम करने वाले को 3 नंबर है, तो इस प्रकार से लैक्टोज डिहाइड्रोजनेस का नंबर हो जाएगा 3, द मेन क्लास दैट इज हाइड्रोलेसेस। उसके बाद 1 डिनोट्स दैट कि वो इस रिएक्शन से रिएक्टेड है, वो हाइड्रोलेसिंग रिएक्शन से, तो डिहाइड्रोजनेस या फिर डिहाइड्रोक्सिलेस, तो डिहाइड्रोजनेस में चला गया, तो 1 आ गया। फिर नेक्स्ट वन जो आया वो है कि ऑर्गेनिक पे है कि इनऑर्गेनिक पे है, तो हमने बोला ऑर्गेनिक के लिए 1 है, तो हमने उसको 1 पे ले लिया, राइट, 3.1.1। अब उसके बाद वो लैक्टोज पे काम करता है, लैक्टोज को हमने थर्ड नंबर दिया गया था। इट्स एज पर द एंजाइम कमीशन, वो जो आईयूपीए है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री जो था, उनके हिसाब से उन्होंने नॉमेनक्लेट किया है। तो लैक्टोज मान लीजिए थर्ड नंबर पे है, तो 3.1.13, इस प्रकार से वो थर्ड वाला जो है वो सबसेट के बताता है जिस पे वो काम कर रहा है। सो विल गो, हम इसको बाद में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम एंजाइम कमीशंस के क्लासेस को एक बार थोड़ा सा ऐसे रिव्यू करेंगे, क्या क्या आता है इसके अंदर में, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कैसे कैसे नंबर। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, दिस इज एन आर्बिट्ररी एग्जांपल, ऐसा नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। 3.1 3 हाइड्रोक्सिलेज, 1 जब बता रहा है वो कि डिहाइड्रोजनेस है या डिहाइड्रोक्सिलेज है, तो डिहाइड्रोजनेस को 1 है तो सपोज तो 3.1 हो गया। फिर देन डिहाइड्रोजनेस में वो ऑर्गेनिक डिहाइड्रोजनेशन करता है या इनऑर्गेनिक डिहाइड्रोजनेशन करता है, उसके बेसिस पे फिर से 1 एंड 2 है, तो 3.1.1 आया। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेस कर रहा है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिसको डिहाइड्रोजनेस किए जाते हैं विच आर नोन टू अस, तो जैसे जैसे वो पता लगेगा वैसे वैसे उनको नंबर देते चले गए। तो मैंने कहा कि शायद लैक्टोज को थर्ड नंबर पर रिकॉग्नाइज किया गया था, तो थर्ड नंबर दिया गया था। तो दैट एंजाइम द लैक्टोज डिहाइड्रोजनेस वुड हैव एन EC number of 3.1.1.3, right? This is the way the enzymes have been classified, so that it has been made a universal way to recognize the molecules, because every time if the substrate is a too big substrate, so then enzyme name also becomes too big. So to avoid this confusion, sometimes it's been पहले पहले जैसे कि ये सबके पहले तो लोग अपनी मर्जी से नाम लगाते थे, जैसे मैंने आपको बताया जब इसी के पहले या क्लासिफिकेशन नहीं हुआ उसके पहले लोग क्या कह रहे थे कि मैनो, सिंपली मैनोस बुलाते थे, किस पे ऐड कर रहे हैं मालूम नहीं, बस इट वी गेट टू नो कि वो सबस्ट्रेट माल्टोज पे ऐड कर रहा है। सो माल्टेज है तो माल्टोज पे है, मैनोस है तो मैनोस नहीं, मैनेज है तो मैनोस पे ऐड कर रहा है, तो लाइक दैट। तो सिंपली वो सिर्फ जिस पे एक्ट कर रहा है उसी से बोलते हैं, लेकिन we usually do not know by the name what kind of catalytic activity it does. So for that purpose we have further दो नाम वाले हमें चूज किए थे, lactose dehydrogenase, where the catalytic activity is also revealed, and ASE is the suffix which tells that it's an enzyme. And slowly this commission has come which has started putting the numbers so it becomes easy and universal for understanding. Okay, Chali, thank you very much. That's all for today. Thank you, sir. Okay, thank you.